Okay, hello everyone. So welcome back. So in today's video we are going to review this DJI Mic Mini. So मैंने अभी ये परचेज़ किया है Amazon से, जो कि मुझे पड़ा अराउंड 10,200 का। ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बो है बेसिकली, 2 ट्रांसमीटर, 1 रिसीवर एंड 1 चार्जिंग पॉट। सो हम कम्प्लीटली अनबॉक्सिंग करेंगे पहले एंड देन विल रिव्यू कि क्या 2025 में बाई करना स्टिल वर्थ इट है या फिर कुछ और कंसिडर करना चाहिए आपको। एंड स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू द मोटो ब्लॉगिंग, अगर आप हेलमेट के अंदर में ये माइक यूज़ करने वाले हो तो कैसा क्या रहने वाला है ये। बिकॉज मैंने अभी एक ऑस्मो 360 भी ऑर्डर किया है, जो कि मैं वंस इट गेट्स डिलीवर्ड मैं आपको पूरा रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग के साथ मैं उसका भी दे दूँगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बिकॉज मैं अभी कंटिन्यूस वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, because I'm going for a ride from Pune to Kerala. So yeah, it's going to be very exciting. So without any further delay, let's get started. So कुछ stickers थी जो मैंने already निकाल दी हैं यहाँ पे. Now we have this DJI Mic Mini, and we have few things in the box. If you see here, what all we have receiver, we have transmitter, 2 transmitter, charging case, carrying pouch, clip magnet, 2 mobile phone adapter, windscreen, camera audio cable, USB-C charging cable, and few documents. And there are few features which is mentioned here that we'll see later on. Let's unbox this. Okay, how do we open this? Okay, probably I'll fine. Let's remove this wrapper. Cool. Now we have this. From where should I open this? Okay, this should be fine. Okay, this is good. Alright, what else we have? I'll keep it separately here. We have DJI Mic Mini. This is the document which is mentioned. So this is done. Document is here. Let me open this pouch. The packaging is really good. If you see this is very premium. देखते हैं कि और कुछ क्या है. This is properly packed. Okay, if you can see here, यहाँ से ये chain open हो जाएगा. And yeah, what else we have? So starting with the first one, we have got the document. So this is done. This is the camera audio cable. Let me open it and then show it to you. ये है audio cable, and then also we have USB-C charging cable. So this is from USB-C charging cable. Okay, and this is our camera audio cable. I'll keep it here. What else we have? This is our windscreen, and we have 4 windscreen. Okay, 2 black and 2 grays or whatever color it is. So we have 4 windscreen. Okay, so I'll keep it here. We have 4. We'll keep these things separate, and whatever we are getting, I'm keeping it here. So these are 4 windscreen. I have cable here, document. I'll keep the pouch separately, and then at the end we have this. Okay, carrying pouch, already I am keeping it here. Magnet, probably it's not here. I'll see if it is inside this case itself, but I'm keeping the pouch here. So now we have 1 2 3 4 5 item is done, and 5 more remaining. Okay, let me open this. Okay, so first thing is the charging case, of course. So this is 6, 4 more is remaining. So 2 transmitter and 1 receiver. Okay, this is also sealed, so everything is properly packed. I really love the packing actually. So keep it here. Okay, slide bottom to open it. Oh, nice. Can you see this? See how it looks? Looks amazing. Okay, so what we have here is we have
two transmitter. Okay, can you see it is blinking? Okay, we have got magnets also here. Can you see? We have two magnets. So magnet is also done. We have carrying pouch already. I have kept it here, and we have charging case, transmitter, receiver, and we also have mobile phone adapter. So we have receiver, two transmitter, these two are magnets, and this is the mobile phone adapter. If you want to connect directly to your mobile phone device, this you can utilize it and you can connect it directly. So how it can be used? If oh, it will be attached from here. Can you see? I had to slide it down, and then can you see this? It will, I'll have to slide it down this way, and then it can be attached here. Can you? Okay, this is done. This is attached. Hopefully this should work. So I have, can you see this? This is not blinking. Okay, so this means this is connected to two of my transmitters, and we have few buttons also. So I'm still also looking for the very first time. This is the power button that we can see here. If I'll click on this power button and press it, now it's closed, like it's shut down. So if you see, both are blinking now. That means it's not connected to any of the receiver. So if I'll power it on, can you see? It's started blinking, and these two are now connected. Can you see this? This is connected. This is still blinking. That means I'll have to connect it to something. Okay. So let me bring my laptop here. I'll see if I can connect to my laptop. So if I can keep it here, let me just show you. Let me just keep it this side, and if I can keep my laptop this way, and if I connect it here, so I have connected my receiver with my MacBook, and if you see, it is asking me to allow accessory to connect. So if I click on allow, if you can see here, the green light stopped blinking. That means it's connected to my MacBook. Okay, and if I can go, and can you see, if I'm clicking here on test microphone, it is, if you can see here, it is showing me DJI Mic Mini. Can you see this here? It is showing me DJI Mic Mini. That means connected. And if I'll see, currently it's far away. So if I'll be here, if you can see this bar, if you can see, this is currently very low. Okay, but I'll keep this to my mouth. Can you see the bar now? It is going up, right? That means my mic is working very fine, right? Hopefully you are able to see this bar. I'll keep this close, and if you see, this bar is now very high because I have kept it to my mouth. Okay, so it's very high. If I'll keep it away, if you can see, the bar is now low. Okay, so that means working very fine. Also, we have multiple modes. Regarding that, you can find multiple options. For example, if from here, from my mic, if I'll double tap, it will change the modes. So we have stereo mode and mono mode. So I'll not show you all those things that you can find already, but I'll show you what exactly that means is stereo and mono. So when you'll keep it in mono mode, so what happens, this both will behave like जब भी आप ये यूज़ करोगे, so ये ऐसा बिहेव करेगा, फॉर एग्जांपल कि ये एक ही माइक जैसा बिहेव करेगा. इट विल नॉट बिहेव एज अ सेपरेट माइक. ओके, बट जब आप ये स्टीरियो मोड पे रखोगे, फॉर एग्जांपल आपको पॉडकास्ट के लिए यूज़ करना है, या फिर किसी और रीज़न से दो लोगों की अलग अलग ऑडियो चाहिए, जहाँ पे आप दोनों ऑडियो के साथ सेपरेटली प्ले कर सकते हो साउंड एंड क्वालिटीज़ के साथ.
So that time you need to utilize the stereo mode, so that you can check. I'll not show you that. So yeah, it's working pretty fine with my Mac as well. Hey guys, so हमने बाकी सारी चीज़ें देख ली, अभी हम मीमो ऐप से कैसे कनेक्ट करेंगे वो सब चीज़ें देखेंगे. एंड एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, ये चार्जिंग केस के पीछे यू कैन सी दिस सी टाइप का पोर्ट. सो यहाँ से आप ये चार्जिंग केस को चार्ज कर सकते हो. बैटरी स्टेटस कितना कैसा है, रिसीवर कितना चार्ज है, वो सब भी हम देखेंगे. तो कनेक्ट कैसे करेंगे पहले उसको देखते हैं. मैंने रिसीवर निकाल लिया है अपना, एंड लेट मी ओपन माय DJI मीमो ऐप. सो यहाँ पे DJI मीमो ऐप मैंने ओपन कर लिया है. एंड यहाँ पे DJI मीमो ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे मिडिल में आपको ये ऑप्शन दिखेगा. कैन यू सी दिस? यहाँ पे ये सर्च कर रहा है डिवाइसेस का, बट ये डिवाइस अभी पेयरिंग मोड में नहीं है. पेयरिंग मोड में ऑन करने के लिए पहले आपको क्या करना है, ये पावर वाले बटन को प्रेस एंड होल्ड करके रखना है 6 सेकेंड के लिए. सो पहले ये जब आप प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो पहले ये ग्रीन जलेगा, एंड देन उसके बाद ये ब्लू टर्न हो जाएगा. दैट मीन्स कि पेयरिंग ऑन हो गया है. ये ब्लू में टर्न हो गया है. अभी यहाँ पे डिवाइस डिटेक्ट हो गया ऑलरेडी. यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा कनेक्ट. सो ये कनेक्ट हो रहा है, ये कनेक्ट हो चुका है. मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ. ओके, वाईफाई ऑन है ऑलरेडी. एंड यहाँ पे आपको दिखेगा ये DJI Mic Mini RX रिसीवर. ये बैटरी का स्टेटस आपको यहाँ पे दिख जाएगा, बैटरी कितना चार्ज है. और यहाँ पे बाकी सारे सेटिंग्स भी आपके अब यहाँ से ओपन हो जाएंगे. यहाँ पे नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल वगैरह सब कुछ यहाँ से आप सेट कर सकते हो. आपको ऑडियो चैनल जो मैंने बताया था, मोनो और स्टीरियो, आपको कौन सा रखना है, मोनो रखना है, स्टीरियो रखना है. एंड बाकी सारे सेटिंग्स, ऑटो ऑफ ऑन रखना है या ऑफ़ करना है, वो सब चीज़ें. देन यहाँ से हम अबाउट डिवाइस में जब जाएंगे तो सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो एज़ पर योर नीड. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं. नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हो. देन अबाउट डिवाइस में जाएंगे तो फॉर्मवेयर है. फॉर्मवेयर मतलब इसका जो सॉफ्टवेयर है उसको हमें अपडेट करना होगा. तो यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि ये लेटेस्ट जो भी सॉफ्टवेयर है इसके साथ इंस्टॉल हो जाए. तो ये एक बार डाउनलोड होके एंड देन ये इंस्टॉल हो जाएगा. ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा क्योंकि ये 1.4 MB के आसपास कहीं दिख रहा है. तो यहाँ पे अगेन रिसीवर जो है मेरे ब्लिंक हो रहे हैं. तो मुझे रिसीवर से जब भी कनेक्ट करना होगा, इस रिसीवर से इन दोनों ट्रांसमीटर को जब मैं यूज़ करूँगा तो अगेन मैं पेयरिंग मोड में जाके एंड देन उसको पेयर कर लूँगा इनके साथ. तो ये बहुत ईजी होगा. मैं प्रॉपरली सब कुछ आपको दिखाऊँगा अगेन वापस से कनेक्ट करके मेरे ऑस्मो के साथ. एंड उस टाइम में मेरा माइक वगैरह कैसे काम करता है सब कुछ मैं उस टाइम आपको दिखाऊंगा. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज मैं प्रॉब्ली 2 दिन में वो मेरा डिलीवर हो जाएगा, ऑस्मो 360. सो उसके साथ मैं यूज़ करने वाला हूँ ये माइक मिनी अपने पूरे ट्रिप के लिए. सो देखते हैं कि कैसा ऑडियो क्वालिटी एंड कैसा 360 का परफॉर्मेंस रहता है, स्पेशली मोटो व्लॉगिंग में. तो मज़ा आने वाला है. तो ये ऑलमोस्ट हो गया है अभी इंस्टॉल, एंड ये अपडेट सक्सेसफुल हो गया. सो ये कंप्लीट हो चुका है एंड इट्स डन. आई विल कनेक्ट रीस्टार्ट DJI डिवाइस एंड DJI मीमो ऐप टू ट्राई अगेन. ओके, मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ अगेन DJI मीमो ऐप को. एंड इसको भी मैं वापस से पावर ऑन कर लेता हूँ. प्रेस करके रखूँगा तो ये पावर ऑफ हो जाएगा. एंड देन वंस आई प्रेस इट अगेन तो ये पावर ऑफ हो गया. एंड देन इसको प्रेस एंड होल्ड करके रखूँगा तो ये ग्रीन ब्लिंक कर रहा है, देन ये ब्लू ब्लिंक करेगा. ओके, सो मैं अभी पेयर कर सकता हूँ इसको. कनेक्ट, एंड वंस इट इज़ कनेक्टेड अगेन मुझे सब कुछ डिटेल्स दिख रहा है. एंड अबाउट डिवाइसेस में जाऊँगा तो ये वर्जन आप देखोगे तो ये अपडेट हो चुका है. डिवाइस का नाम वगैरह सब कुछ शो कर रहा है यहाँ पे. ये सब चीज़ें ऑलरेडी अपडेट हो गई हैं. तो 2025 में स्टिल आफ्टर डूइंग मेनी रिसर्च मुझे DJI का ये बहुत बेस्ट लगा अभी तक. बट यूजेस मैं देख के आपको बताऊंगा कि कैसा क्या रहता है. जब ऑस्मो आएगा तो मैं उसको रियल लाइफ में पहले टेस्ट करूँगा बिफोर गोइंग फॉर अ ट्रिप. सो पहले मैं टेस्ट करूँगा 1-2 बार उसको अपने बाइक पे, एंड देन मैं बताऊंगा कि कैसा क्या रहने वाला है. मेरा हेलमेट भी डिलीवर होने वाला है, चेन माउंट, तो उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैं डाल दूंगा कि वो सब कैसा क्या रहने वाला है. तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे.